Class 7 Science. I am R.S. Prasad sir. Today your chapter 20, that is the reproduction in living organisms. So let us start. It will be your chapter number 20 and that is the reproduction in living organisms. So you can see here it is the flower of lady fingers. लेडी फिंगर का फ्लावर है, इसमें ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये आपका पीटल है। इसके बाद यहाँ जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, एंड्रोसियम है ये। और ये जो आपको दिखाई दे रही पत्ती सी दिखाई दे रही ये है कैलिक्स है ये। इसके बाद यहाँ आ जाइए, क्या है ये साइनोसियम में क्या क्या दिया हुआ है। एक तो ये ओवरी दिखाई दे रही, जो ये मोटा सा पार्ट है ये ओवरी है। इसके बाद ये पतला सा पार्ट ऊपर को उठता हुआ जा रहा है, दैट इज द स्टाइल। और ऊपर ये जो दिखाई दे रहा है छोटे छोटे से ये स्टिग्मा, और ये जो है उसका पूरा फ्रूट है। तो इस तरह से आप लोग फ्लावर से फ्रूट तक का जो है सफर दिखाया हुआ है इसमें। चलिए और आगे देखते हैं जरा, ये क्या है, कटिंग द जाइनोसियम एंड फ्रूट ट्रांसवर्सली इसको कट करके देख रहे हैं। इसको जब कट करके हैं तो ये ऐसा दिखाई देगा, लेकिन जब फ्रूट को ऐसे कट करेंगे तो ये ऐसा दिखाई देता है। इनमें डिफरेंस क्या होता है, यहाँ तो जो होता है ओवल होता है जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये रखा हुआ दिखाई दे रहा है, और ये जो है बीच में सीड्स होते हैं। किसमें, फ्रूट वाले में सीड्स होंगे और दूसरे वाले में क्या होंगे, यहाँ पर केवल ओवल्स होते हैं। तो ये क्या है, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ओवरी एंड फ्रूट। ये ओवरी और फ्रूट दोनों के ट्रांसवर्सन सेक्शन है जो इनसाइड से दिखाई देते हैं। चलिए अब ये वर्टिकल यहाँ से देखो काटा गया है, ये आपका फ्लावर है और ये फ्रूट है, दोनों को काट करके दिखा रहे हैं। सो कटिंग द गाइनोसियम एंड फ्रूट लॉन्गिट्यूडनल। तो लॉन्गिट्यूडनल कट है ये, तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द ओवरी एंड फ्रूट। ये ओवरी दिखाई गई है, ओवल्स के अंदर है, और ये क्या है, सीड्स है आपके। तो इस तरह से फ्रूट में और किसमें, ओवरी में, दोनों में डिफरेंस यहाँ पे शो करके दिखाया हुआ। अब यहाँ पे फ्लावर के बारे में बता रहे हैं, तो सबसे पहले यूनिसेक्सुअल की बात कर लेते हैं। यूनिसेक्सुअल में ये मेल फ्लावर है और ये भी मेल फ्लावर है, बोथ आर द मेल फ्लावर, यहाँ दिखाई दे रहा है आपको इसमें। और इसके बाद देखो ये फीमेल फ्लावर है, फीमेल फ्लावर की इससे पहचान होती है बच्चों, ये कुछ राउंड शेप का बन जाता है थोड़ा सा। और ये भी आपका फीमेल फ्लावर है क्योंकि ये भी ऐसा ही दिखाई दे रहा है आपको यहाँ से। अब यहाँ पे फिर आ गया, ये दोनों के दोनों यूनिसेक्सुअल थे। एक ये भी यूनिसेक्सुअल है, इसमें मेल फ्लावर है यहाँ पे बना हुआ, और यहाँ पर फीमेल फ्लावर आपको दिखाई दे रहा है। ये फीमेल फ्लावर है और ये मेल फ्लावर है, लेकिन एक ही फ्लावर में दोनों पार्ट होते हैं, उसको कहते हैं बाइसेक्सुअल। अब यहाँ पे देखिए ये आपको क्या दिया हुआ है, ये एंड्रोसियम है यहाँ पे, और ये गाइनोसियम है। गाइनोसियम ये दिखाई दे रहा है और एंड्रोसियम ये दिखाई दे रहा है आपको, तो दोनों के दोनों यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज बाइसेक्सुअल। तो ये बाइसेक्सुअल है, इधर यूनिसेक्सुअल है, तीनों के तीनों में सेपरेट एक एक फ्लावर जो है मेल और फीमेल के बने हुए हैं, लेकिन यहाँ एक में ही मेल भी है और फीमेल भी है। सो दैट इज कॉल्ड एज बाइसेक्सुअल। चलिए ये क्या दिखा रहा, कटिंग द एंथर लॉब ट्रांसवर्सली। ट्रांसवर्सली जो है ये एंथर है, एंथर को, और ये कनेक्टिव है यहाँ पे, ये चीज कनेक्टिव और ये फिलामेंट है। इसको जब कट करते हैं तो ये ऐसा शो करके दिखाई देता है, जैसा कि फिगर में आपको दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है, कनेक्टर है यहाँ पे, जो बीच में दिखाई दे रहा है ये पोर्शन कनेक्टर है, और ये पोलन ग्रेन है जो इसके अंदर होते हैं, जिसकी सहायता से क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। सो ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द एंथर, और ये कटिंग ऑफ एंथर लॉब ट्रांसवर्सली। ये आपको क्या दिखा रहे हैं, ये वर्टिकल सेक्शन ऑफ द जाइनोसियम है। तो ये स्टिग्मा है जो ऊपर वाले पार्ट में है, ये बीच में लंबी सी ट्यूब दिखाई दे रही है, ये स्टाइल है, और ये जो फूली हुई चीज दिखाई दे रही ये ओवरी है, और ये एग बीच में पड़ा रहता है, ये पूरा एग है, उसके बीच में जो दिखाई दे रहा है ये ओवल बोलते हैं इसको। अब ये पोलन ग्रेन का दिखाई दे रहा, पोलन ग्रेन ऑन स्लाइड है ये। इस स्लाइड पर हमने क्या करा, पोलन ग्रेन को डालना चालू करा। किससे डाल रहे हैं, एंड्रोसियम से। तो ये पोलन ग्रेन जो है इस तरह से कुछ दिखते हैं, आपको दिखाई दे रही है, पोलन ट्यूब है यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये पोलन ग्रेन है। तो फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब, ये पोलन ट्यूब का कैसे फॉर्म होता है वो आपको बताया गया है। नाउ कम टू द, ये एंथर आपका दिखाई दे रहा है, ये एंथर है आपका, और पोलन ग्रेन यहाँ से देखो निकल रहे हैं, यहाँ से पोलन ग्रेन जा रहे हैं
और ये यहाँ पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपका क्या चीज है, ये स्टिग्मा है, आपको पहले भी बताया, और ये जो बीच में दिखाई दे रहा है ये स्टाइल कहलाता है, और ये पोलन ट्यूब होती है जो ऊपर से नीचे की तरफ आती है, जहां से पोलन ग्रेन इसके अंदर आता है, ये यहाँ से जा करके इस जगह पहुंच जाती है, ये पोलन ट्यूब हुई। इसके बाद ये जो मोटी सी दिखाई दे रही ये ओवरी है, और ये लास्ट में यहाँ जो दिखाई दे रहा है दैट इज द ओवल। अब यहाँ पर जो ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे जो बनता है इसको कहते हैं फीमेल गैमेट्स, और ये फीमेल गैमेट्स आपका दोनों दिख रहे हैं यहाँ पे, तो ये और ये दोनों मिला करके फीमेल गैमेट्स हैं। तो ये फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स को शो करके बताया गया है आपको। चलिए आगे देखते हैं ये क्या है। ये नोट्स हैं जो कि कैन शुगर में मिलते हैं, शुगर कैन में होता है ये, और ये रूट्स यहाँ बन जाते हैं, ये रूट्स निकलते हैं यहाँ पे। तो ऐसे ही स्टेम ऑफ रोज है, स्टेम ऑफ रोज में भी ये इस तरह से बनते हैं। तो ये क्या है, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, ये जो है सेक्सुअल इसमें नहीं होता है, बिना सेक्सुअल के ही ये रिप्रोडक्शन करते हैं। चलिए ये क्या है, ये ब्रायोफिलियम लीफ है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट है। ये बिना सेक्सुअल के ही यहाँ से प्लांट ग्रो होना चालू हो जाते हैं। ये देखो साइड से प्लांट दिखते हैं, तो ये लीफ है, लीफ से प्लांट्स। पोटैटो है, पोटैटो में ये देखो ये जो है यहाँ से क्या बर्ड्स एंड रूट बने हुए हैं, यहाँ से आपका प्लांट निकलना चालू हो जाता है। ये क्या है, स्वीट पोटैटो है, स्वीट पोटैटो में भी साइड साइड से देखो निकल रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ से ये ग्रो करना चालू कर देता है। ये क्या है, गार्लिक है, गार्लिक में भी अलग से पीस है, ये विदाउट सेक्सुअल के ही होता है, ये ग्रो करना चालू कर देता है। तो इस तरह से असेक्सुअल ये रिप्रोडक्शन चालू होता है। इसमें एग्स और लार्वा दिया हुआ देखो, इसमें ये इंसेक्ट्स हैं और ये डक कर रखा है इन्होंने। तो ये बॉक्स ए और बॉक्स बी दिखाए हैं और इसमें एग्स और लार्वा रख देते हैं। इससे क्या होता है, यहाँ पे इनकी जनरेशन बढ़ती रहती है और चलती रहती है। ये आपका क्या दिया, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म दिया हुआ, ये हम लोगों का ह्यूमन का स्पर्म है। इसके बाद ये स्ट्रक्चर ऑफ एन एग है, ये एग का स्ट्रक्चर दे रखा है जो फीमेल में होता है और ये मेल के पास होता है। तो स्पर्म एंड एग बोथ आर फ्यूज टुगेदर, यहाँ पर एग और स्पर्म बोथ आर फ्यूज टुगेदर एंड दे फॉर्म जायगोट। और जायगोट के बाद क्या होता है, सेल डिवीजन चालू हो जाता है और डेवलपमेंट चालू हो जाता है। इसके बाद बनता है एम्ब्रो, एम्ब्रो के बाद बनता है इन्फेंट। इन्फेंट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ये क्या है, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट इन ह्यूमन, ह्यूमन के अंदर कैसे इसका डेवलपमेंट होता है वो शो करके दिखाया गया है। अब चलते हैं आगे, ये क्या चीज है, ये बाइनरी फिजन डिवीजन इन अमीबा। अमीबा में इसका ब्रेकअप होना है टू टाइप्स में। इनमें रिप्रोडक्शन कैसे चालू होता है, खुद ही कट जाते हैं बेचारे। ये पहले एक दिखाई दे रहा है आपको, इसके बाद ये दो सेल्स अंदर का न्यूक्लियस पहले डिवाइड होता है। जब ये न्यूक्लियस डिवाइड होता है, जैसे ही डिवाइड होता है वहां से ये ब्रेकअप हो जाता है और दो पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बाइनरी फिजन डिवीजन इन अमीबा है। तो अमीबा में भी इस तरह से चलता है। आगे देखते हैं ये क्या चीज है, रीजनरेशन इन हाइड्रा। हाइड्रा में जो रीजनरेशन होता है, अगर यहाँ से कट मारते हैं यानी काट के अलग कर दें तो ये दो प्लांट्स बना लेता है। ये दिखाई दे रहा है आपको, ये प्लांट आपको दोनों के दोनों अलग से दो एनिमल्स फॉर्म हो जाते हैं, दो हाइड्रा हो जाते हैं। और इस तरह से ये विदाउट सेक्सुअल यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ये यहाँ पर भी देखिए बर्डिंग इन हाइड्रा है, ये बर्डिंग हाइड्रा में अलग से निकल रहा है, अलग से निकलते निकलते ये बिल्कुल सेपरेट हो जाता है और एक अलग बन जाता है। ये भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस इंडिविजुअल ऑफ देयर ओन काइंड। Reproduction is of two types, sexual and asexual. Male and female gametes are required to carry out sexual reproduction. In plants, androecium in the male reproductive organs and the gynoecium is the female reproductive organ. Androecium contains pollen grain and the gynoecium contains ovule. Transfer of pollen from anther to stigma is called pollination. In sexual reproduction, new plants arise from any plant of the parent plant other than the seed. Most animals exhibit sexual reproduction, but some microorganisms and lower animals exhibit asexual reproduction. In higher organisms, the main reproductive organs in males is testis and in female the ovary. Sperm are
produced in the testes and eggs are produced in the ovary. So external fertilization occurs in some animals and internal fertilization occurs in others. Animals which gives birth to young one are called viviparous and those which lay eggs are called oviparous. So transformation of zygote into embryo and embryo into young animal is called development. Development of new individual through fragmentation is called regeneration. Now come to the choose the correct answer. So first one, these are the reproductive organs in flower. कौन सा है reproductive organ बताना है इसमें. तो ये आपका ये है क्लेक्स एंड एंड्रोसियम. ये जो है जाइनोसियम एंड एंड्रोसियम है. और सीड्स इज फॉर्म फ्रॉम कहाँ बनता है, किससे बनता है, ये एग से बनता है हमारा. इसके बाद है स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड इन किस में होता है, ये टेस्टिस में होता है. इन ह्यूमन बीइंग द एग आर फर्टिलाइज्ड इन कहाँ होता है, इट इज इन ओवरी. ओवरी में जाके होता है ये. चलिए आगे देखते हैं. द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. इसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं. Now second है after fertilization of flower the ovary gets converted into fruit. Now third one है the reproduction in sugar cane is usually through that is asexual reproduction. Now amoeba reproduce asexual through ये बाइनरी से होता है. Now fifth one the structure formed during asexual reproduction in hydra is called bud. ये bud बोला जाता है इसमें. Now make a list of 5 oviparous and 5 viviparous animals. So you can see here serial number 1, 2, 3, 4, 5. So oviparous animal hen हो गया, frog हो गया, fish हो गया, pigeon and lizard. Viviparous animal cow, horse, human being, buffalo and bat. Name 2 oviparous animals where the young one resemble their parents. So that is the hen and pigeon are the 2 oviparous whose young ones resemble their parents. Name 2 oviparous animals where the young one do not resemble their parents. So you can write here answer. Fish and frog are the 2 oviparous animals whose young one do not resemble their parents. Name 2 animals whose offspring can start moving immediately after birth. So goat and cow are the animals whose offspring can start moving immediately after birth. Name 2 animals whose offspring can start moving on swimming immediately after coming out of the egg. So fish and frog are the animals whose offspring can start moving or swimming immediately after coming out of egg. Now identify whether these statements are correct or incorrect. Correct the incorrect statement. First है the flower of pumpkin are unisexual. Second है embryos and seeds are produced during asexual reproduction. Third है rose plants are usually grown from seeds. Fourth है sexual reproduction requires the fusion of the sperm with an egg. Amoeba usually reproduce sexually and there is an internal fertilization in fishes. So that is the answer आपका. First है incorrect. So correct is the flower of pumpkin are bisexual.
सेकंड भी आपका इनकरेक्ट है, एम्ब्रोस एंड सीड्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थर्ड भी आपका इनकरेक्ट है, रोज प्लांट्स आर जनरली ग्रोन फ्रॉम स्टेम। फोर्थ भी करेक्ट है आपका। फिफ्थ जो है इनकरेक्ट है, अमीबा यूजुअली रिप्रोड्यूस असेक्सुअली। सिक्स भी इनकरेक्ट है। करेक्ट क्या है, देयर इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इन फिशेस। चलिए फर्स्ट है ओविपोरस, सेकंड है बेबीपोरस एंड फर्टिलाइजेशन। इसमें आंसर देना है, इसको शॉर्ट नोट्स लिखना है इस पे बच्चों। सो आंसर है फर्स्ट है ओविपोरस को देखते हैं। एनिमल्स विच ले एग्स आर called oviparous. In many oviparous animals, the offspring do not resemble the parents. The young animal which comes out the egg is called larva. The larva develop into a pupa and the pupa develops into the adult. This process is called metamorphosis and occurs in mosquito, flies, etc. Viviparous animals which give birth to young one are called viviparous in animals, and the development of the young take place in the uterus and they give birth to a fully developed offspring. Example, cow, horse and cats are. Number third, fertilization. The fusion of male gametes and female gametes is called fertilization. In plants, male reproductive organs is androcium and female reproductive organs is gynecium. Question is that what is reproduction? So you can write the answer. Reproduction is the process by which organisms produce individual of their own kinds. So explain briefly. First is sexual reproduction and second is asexual reproduction and third is pollination. So first one, sexual reproduction. Male and female gametes are required to carry out sexual reproduction in both plants and animals. Sexual reproductive organs are found in plants and androcium is the male reproductive organ and gynecium is the female reproductive organs. In animals, the reproductive organs in male is testis and in female the ovary. Example, dog, cat, lady's finger, etc. Now come to the asexual reproduction. In asexual reproduction, only one parent is required. The main method of asexual reproduction are binary fission, budding by spores, vegetative reproduction and regeneration. Example है amoeba, hydra, potato, sugar cane. Now pollination. Pollination is the process in which the pollen grain of one flower each on the stigma of the carpels of the same flower or the other flower through different sources. Now draw a diagram of bisexual flower and label the various parts of the androcium and gynecium. एग्जाम्पल है ये आपका पीटल शो करके दिखाया हुआ है। फिर ये क्या है आपका, ये जो शो कर रखा है यहाँ पे ये एंड्रोसियम है और ये क्लैक्स है। यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये क्लैक्स है आपका। और ये क्या है, ये स्टिग्मा है और ये क्या चीज है, ये स्टाइल है आपका और ये ओवरी है और ये ओवल है। तो ये क्या चीज है, ये वर्टिकल सेक्शन ऑफ गाइनोसियम है। तो चलिए इसके बाद आगे देखते हैं जरा, ये क्या है, differentiate between the asexual and sexual reproduction. So you have to write your answer. In sexual reproduction, new organisms is formed by one individual only, but in sexual reproduction, two different gametes, male and females, are required. Next question है, explain asexual reproduction in the amoeba with diagram. Diagram से आपको दिखाई दे रहा है कि ये सिंगल था पूरा पीस, इसके बाद जब ये दो में डिवाइड होना चालू हुआ है तो ये यहाँ से ब्रेकअप होकर के जैसे ब्रेकअप होता है ये टू में डिवाइड हो जाता है आपका। तो ये क्या जी है, फ्यूजन ऑफ
कैप्सूल्स हैं ये, तो दो में देखो ये डिवाइड हो गया, डिवाइड होने के बाद ये फिर से अलग अलग बन गया है. So it is the binary fission and division in amoeba है. So you can draw this diagram. What is regeneration? Explain with example. So you can write answer. Some plants and animals possess the ability to develop their lost or damaged parts. This capability is called or development of new individual through fragmentation is called regeneration. Example है tails of a lizard develops again due to regeneration. What is budding? Budding क्या है? In some animals under the favorable condition, a small protuberance called a bud appears on the surface of the body. On further growth and development, this bud separates from the parents and thus become a new individual. This process is called budding. Example है hydra reproduces by the budding. Explain the vegetation reproduction. So some part of a plant is cut and put in the soil. This process is called vegetative reproduction. What are spores? So spores are the minute round unicellular structure represent in flower plant. Under suitable conditions, it sprout and forms a new plant. So what is growth? So change in the shape, size and weight of a cell is called growth. Thus it is a result of process of successful metabolism. What is development? So you can write answer. The change which occurs during growth from zygote to adult is called development. It takes place in a serial order. What is meant by external and internal fertilization? Give two examples of each. So you can write the external fertilization when the process of fusion of male and female gametes take place outside the body. The process is termed as external fertilization, such as in frog, fish, etc. Internal fertilization में क्या होता है? When the process of fusion of male and female gametes take place inside the body. The process is termed as internal fertilization, such as rat, man, and cat. Question and next, from which part of the embryo are the roots and the shoots of a plant develops? Write the name. So answer is here, roots and shoots of the plant develop from the radicle and the plumule of embryo. So name two animals in which regeneration occurs. So answer is Planaria and starfish. What are the various means of pollination? So you can write the answer. Air, water, insects, human beings, etc. are the means of pollination. So what do you oval and ovary gets converted to after fertilization? So after fertilization, ovals are converted into seeds and ovary into fruits. Where does germination of pollination grain take place? Answer is that germination of flopping again take place on the stigma of pistil. Next question, what temperature is required for the growth of zygotes in hen's eggs? So answer is 37.8 degrees C or 100 degree Fahrenheit. So name two bisexual organisms. So that is the earthworm and leech. Now choose the correct answer. So first one is the production of offspring of own kind is known as. So that is the reproduction. Second है the group of animal which reproduce more or its kind by laying egg is. So that is the bird, snake and frog. Now two parents are required for this type of reproduction.
that is the by fusion of male and female gametes. Now zygote is formed by fusion of male and female gametes. Fifth है in flowering plants ovum is present in, that is the oval. Sixth है process of fusion of male and female gametes is called, that is the fertilization. Seventh है method of reproduction in amoeba and bacteria is, so that is the fusion. Now match the following A and B there is. So first one है yeast. yeast के लिए ये है आपका budding है, it is your budding, यानी first one is the here. Second है potato, it is the vegetative propagation, so that is the second. And third क्या है hydra. hydra में आपका ये आएगा regeneration, that is the थर्ड वन. इसके बाद आता है फंगस. फंगस के लिए होता है ये स्पोर्स फॉर्मेशन, दैट इज द फोर्थ पार्ट. एंड द बैक्टीरिया इज द फिफ्थ, दैट इज द ओनली सी बाइनरी फ्यूजन, सो दैट इज द फिफ्थ वन. नाउ कम टू द फिल इन द ब्लैंक्स वंस अगेन. सो रिप्रोडक्टिव सेल यूज्ड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड, क्या ये जामेट्स बोलते हैं इसको. Second है two gametes unite together to form a third cell called zygote. Third है process of fusion of gametes is called, क्या बोलते हैं इसको, fertilization. Now in higher animals male gametes are called, that is the sperm. In higher animals female gametes are called, that is the ovum. Pollen grain are produced in of flower, that is the pollen section. Process of transfer of pollen grain from stamen to stigma is carpel is called. It is pollination. Now in flower female gametes is called, it is ovum. Now in flower after fertilization is seed है. Seed and fruit is formed by oval and fruit is formed by ovary. Now 10th है earthworm is a animal, क्या ये bisexual है, so you can write here. Write true or false. So first one is the asexual reproduction required two parents, it is false statement, so you can write false. Now second जो है birds give birth to young one, it is also false. Second है paramecium increase their generation by binary fusion method, so that is true. Fourth है ovals are round structure which form seeds, so it is also true. और इसी के साथ ये लेसन आपका फिनिश हो रहा है. नीचे लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरे चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे आप लोगों को कैसा लग रहा है.
और क्या मुझे बना करके भेजना है, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके, और बेल आइकन को भी दबा लेंगे जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं RS प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। मेरे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।